this is a podcast series, not just podcast, but I don't know what it's going to be, a social media series. हम लोग के channel का नाम है भाई चारा. As you can see, there are 4 of us. और because हम लोग जो हैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाई भी हैं, तो ये हम लोग इकट्ठे हुए हैं इस क्या कहते हैं, कौन से चमकदार दिन में. आई एम नॉट श्योर, मुझे लैंग्वेज वो इतनी नहीं आती, बट the idea behind getting all of us together is that there is a huge need for a space where men can openly express themselves about their emotional needs, about things that affect them on a daily life, whether it's childhood issues, whether it's issues that we deal with on a daily basis, especially in terms of our relationships with our, whether it's co-workers, relatives, spouses, parents, children. I mean, there's a lot of issues that we come across, and we feel there's no necessarily, or at least I feel, I'm hoping you guys might agree, कि मर्दों के लिए जो है वो space ज़्यादा available नहीं होता. On a very related note to that, a lot of because आजकल जो है mental health और the क्या कहते हैं issues around women's women's issues, actually within both of these subjects, something that I feel has always been missing is the narrative of men. आप जब भी अगर especially औरतों की कोई मतलब कि whether it's an issue around mental health, whether it's an issue around families, it always tends to focus more towards women. And I'm not saying that's a bad thing. I just feel that that's something that a lot of women have also pointed out, कि उसके अंदर मर्दों का जो है वो बहुत सवाल आता है कि उनके अपने क्या narrative है, what are their issues, what are they thinking. So because that is such an important issue and it's such a huge gap, जिसके ऊपर honestly अभी तक I have not come across any space जहाँ पे मर्द जो है ना openly इन चीजों की बात कर सकते हैं, whether it's sexuality, whether it's a relationship, whatever it is. हम जो honestly सोच रहे हैं, अगर किसी के ऊपर आपको गुस्सा आया हुआ है, we can't openly express these things because whether it's a cultural norm, or whether it's हम लोग के अपने जो भी insecurities होते हैं, or whatever it is, there tends to be that gap कि हम लोग जो है ना वो openly express नहीं कर सकते. So eventually I feel or at least I feel all of us feel that there needs to be that space जहाँ पे मर्द जो है ना openly अपने आप को express कर सके. So I'll quickly introduce myself and then introduce the rest of our brothers as well. I'll hand it over to them to introduce themselves. My name is Umair Tamim. I've been in the non-profit sector for about 13, 14 years. I can't remember anymore. It doesn't matter. I am married to a therapist, which is very helpful. I have 2 best friends who have joined me here who are also therapists. So alhamdulillah, that ability to openly express जो है वो मेरे लिए काफी आसान रहा है because of such close relationships. And the reason I'm here honestly is because I think I've already expressed the need for us to openly explore these things. But for myself specifically or personally, I think it's because मैं बचपन से जो है मेरी एक चीज थी कि मुझे बहुत बड़े ग्रुप्स के अंदर दोस्तियां जो थी ना कभी समझ नहीं आती थी. I could never relate to people on a large scale. मैं engage उस तरह नहीं कर सकता because मेरे लिए वो हमेशा competition होता था. The true friendships that I had were always with a few people because I could talk to them individually. And that's just something I think मेरे अंदर एक मेरी nature इस किस्म की थी. So but we'll explore all of these things more. I'll hand it over now to Umar Tausif if he can give an introduction and anything he wants, and basically describe or explain why he's here. I'm Umar Tausif. I'm a therapist. इधर इस कमरे में भाईचारे में से 2 पूरे थेरेपिस्ट हैं, मैं और उमर लतीफ. उमैर तमीम जो है उनकी एक थेरेपिस्ट से शादी हुई है, तो ये आधे थेरेपिस्ट हैं. शोएब राना साहब जो हैं ये इन्होंने इम्तिहान पास कर लिया था डॉक्टर, इन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, तो ये भी आधे थेरेपिस्ट हैं. So I think that at least मेरे लिए what brings me here was I think there was a moment जिधर हम 4 कोई बात कर रहे थे and I just said in that moment कि यार हम जिस तरह से एक दूसरे से बात कर सकते हैं, पहली बात है हम किसी से इस फोरम के बाहर ऐसे बात नहीं करते, and there are very few spaces where इस तरह की conversations कहीं भी होती हैं. And I remember saying कि यार we should think about this, that we have to take it up and talk about it. So I'm very committed to this process that as we go along
I think there's a very, very dire need for these conversations to be made between men, not in competition to women, not in opposition to them, but first for these to very organically happen between us. And my hope is कि हम जितनी भी अभी तक बातें कर सके उनको भी हम थोड़ा आगे चल लेके चल सके. मैं इस वक्त में I'm in Australia, but I'm originally from Pakistan. That's me. उमर, प्लीज आप अगर आप अपना इंट्रोडक्शन दें. अपनी बकवास अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. जिस तरह के उमर अभी बता रहा था कि वी वर टुगेदर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, और जो चीज सोच रहा था इट वाज समथिंग जो कि एटलीस्ट मेरे दिमाग में थी, बट ही वाज द वन हु सेड इट, कि कोई एक स्पेस उस तरह की जो है वो शायद है नहीं. मतलब कि हम चारों के पास फॉर्चुनेटली जो है वो है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास वो स्पेस नहीं होती जिनमें वो वाली बातें कर सकें जो कि वो सोच नहीं सकते किसी और से बात करने के लिए. और इट बिकम्स वेरी सॉर्ट ऑफ डिफिकल्ट, एंड टॉपिक्स कुछ इस तरह जिस तरह उमर ने कहा, सेक्सुअलिटी, रिलेशनशिप, स्पाउसेस, इवन इन माय पर्टिकुलर केस समथिंग सिबलिंग्स आल्सो कम्स अप. उस तरह के जो रिलेशनशिप होते हैं उनको किस तरह सॉर्ट ऑफ डील करना है, जो आप डायरेक्टली जो है उस तरह बात नहीं कर सकते. टू बी एबल टू टॉक अबाउट देम विद समबडी एल्स ऑन अ सिमिलर लेवल, जिसकी सोच आपसे मिलती हो, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी जो है वो थोड़ा सिमिलर हो, ताकि उस हिसाब से जो है वो बात भी हो सके और एडवाइस भी उस हिसाब से जो है मिल सके. तो वो दोनों ही नीड्स हैं, एक तो सिर्फ बात करने की भी है, और बीइंग मैन इन लॉट ऑफ केसेस एटलीस्ट आई वुड वांट सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स एंड नॉट जस्ट बी एबल टू सॉर्ट ऑफ एक्सप्रेस देम. तो वो वाली स्पेस जो है आई थिंक बहुत सारे लोगों के लिए मिसिंग है, एंड ये ब्रेन चाइल्ड जो है वो तौसीफ का ही है. एंड इट्स अ वंडरफुल सॉर्ट ऑफ वे टू सॉर्ट ऑफ ब्रिंग दिस अप, बिकॉज ये वाली स्पेस बाकी एटलीस्ट मैंने जितनी देखी है वो नहीं है. एंड कोइंसिडेंटली it came up with respect to somebody who wanted to start a group for men, and the idea came up from a woman. तो मैं ये सोचता हूँ कि उन्होंने नीड जो है वो देखी है, and somehow we have been unable to sort of express कि यार ये हमारी भी नीड है, and maybe we can come up with a platform जहाँ बंदे जो हैं हमारे जो हैं similar age group, somewhat similar like-mindedness, हम बात कर सकें. तो yeah, and I'm based in Lahore. I'm a therapist as well. I've been doing it for 5-6 years now. Tausif mera senior hai. He's actually the person who got me here, but that's for another day. Rana sir, आप कुछ गुफ्तगू करना चाहें? थैंक यू. शोएब राना. मेरा जो बैकग्राउंड है ज़्यादा, आई थिंक इट्स बिन 20+ years विद कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो ज़्यादा मेरा बैकग्राउंड इज़ टेक्निकल, और थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस पढ़ने पढ़ाने तक थेरेपी और काउंसलिंग का भी रहा है, विच वॉज वेरी गुड एक्सपीरियंस. तो बैकग्राउंड तो ये, आई हैव 2 sons. वो इटसेल्फ एक पूरी यूनिवर्सिटी है उनको, उनकी पेरेंटिंग करना. विल कम टू दैट कि वो क्या है. तो बाकी आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव. मैं खुद बड़े अरसे से ये सोच रहा था, जहन में था, लेकिन इनिशिएटिव लेना जो आपको पता है वो एक ज़रा मुश्किल काम होता है. तो थैंक्स टू उमर तौसीफ, उन्होंने बड़ा अच्छा ये जो हमारी डिस्कशंस हुई हैं और इसके ऊपर उन्होंने स्टार्ट किया. आई थिंक दिस इज़ वंडरफुल आइडिया. एक तो हम आपस में भी डिस्कस करेंगे, और ये जो मुझे इसमें जो खूबसूरती लग रही है इस जो प्लान है वो ये कि वो वट एवर विल बी डिस्कसिंग, देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल हु कैन कनेक्ट टू इट, हु कैन रिलेट टू इट. और हमारी ही जो डिस्कशंस हैं उसमें से बहुत से ऐसे पॉइंट्स निकलेंगे जो, जैसे आपने कहा कि हम डिस्कस नहीं कर सकते. मैं देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई जस्ट कैन नॉट डिस्कस विद एनीवन. आप लोगों के साथ भी प्रॉब्ली अभी एज यू गाइस वर गिविंग इंट्रोडक्शन, तो प्रॉब्ली क्योंकि वो थेरेपी का बैकग्राउंड है आप लोगों का, तो एक साथ एक अटैच्ड एक बैनर साथ आ रहा होता है कि आप लोग जज नहीं करेंगे, आप लोग उसको उस तरीके से परसीव नहीं करेंगे जिस तरह एक जनरली आपके जहन में होता है, यार ये मैंने बात बताई तो ये बंदा क्या सोचेगा मेरे बारे में. तो वो एक फियर एटलीस्ट इस स्मॉल प्रेशियस ग्रुप के अंदर मुझे नहीं होता. तो आई होप कि इसको हम आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड करें, और ये जो जनरल विद इन मेल क्लैन, ये जो हम एक हर वक्त कंपटीशन में रहते हैं जैसे उमर साहब ने कहा, तो होपफुली इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम थोड़ा सा उसको भी डिफ्यूज़ करें कि आदमी भी इंसान ही है. और तो लेट्स सी. तो कुछ बताएं फिर उमर साहब, इसको हमने क्या, किस तरह, हाउ डू वी स्टार्ट, क्या आज का एजेंडा क्या है आपका?
यार हमारा एजेंडा भाई, चार भाइयों का क्या एजेंडा है ऑनेस्टली। आई थिंक आपने जो बात की ना, मैं उसी के ऊपर आऊंगा। जो आपने कहा ना कि देयर इज अ फियर जिसकी वजह से हम लोग शायद इतनी ओपनली दूसरों से बात कर नहीं सकते। सो दैट्स, मैं चाहता हूँ एक्चुअली इसे थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लोर किया जाए। सो इसके ऊपर जो है ना, मैं एक बहुत ब्रीफ सा कहना चाहूंगा एंड देन मे बी वी कैन एलैबोरेट ऑन दिस कि यू नो हमारे जो भी इमोशनल नीड्स होते हैं, आई मीन ये ऑनेस्टली मैं सच्ची बताऊं, ये 10 साल पहले जो था, आई डोंट इवन थिंक कि हम लोग आपस में जो है, इवन जो आप खुद बताए ना, कभी ये हम लोगों ने दोस्तों में आपस में डिड वी एवर यूज द वर्ड इमोशनल नीड्स, या ये मुझे मसला हो रहा है, जो भी होता था, या तो आप अपने दोस्त से जाके कहते थे यार ये मसला हो गया, बट वो दोस्त एक आधे होते, जैसे मैंने शुरू में बताया था, आई ऑलवेज हैड लाइक वेरी लाइक वन और टू सेलेक्ट फ्रेंड्स जिनके साथ आप इतनी ओपनली, लेकिन उनके साथ भी एक सेंस ऑफ रिजर्वेशन होती थी, फियर ऑफ जजमेंट होती थी। सो आई थिंक पहला जो जो सवाल आई थिंक हम सारों के लिए है कि हाउ, एक तो फर्स्ट ऑफ हाउ डू वी एक्चुअली कम्युनिकेट विद ईच अदर। एक तो उसके अंदर आई थिंक दो तीन चीजें जिसको वी वुड वांट टू एक्सप्लोर, इज देयर फियर ऑफ जजमेंट बिटवीन मेन बिकॉज वी आर ऑलवेज इन कंपटीशन? इज दैट कंपटीशन लाइक कल्चरली रिलेटेड? इज दैट बचपने से आपको आ रहा होता है? इज इट बिकॉज कि हम लोग यू नो वैसे ही कल्चरली जो है, आपको मर्दों को वैसे ज्यादा रोना नहीं चाहिए, या ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, मर्द रो भी नहीं सकता। यू नो देयर वाज एन एपिसोड आई थिंक इंडिया में आया था कि मर्दों को रोना नहीं चाहिए, मतलब कि बाप जो था हमेशा कहता रोना नहीं है, रोना नहीं है, और वो बड़े होके जो है अपनी बीवी को मार के जो है, मतलब कि उसे जो भी होता था ना, वो अंदर उसने दबाया होता था, राइट? सो देयर इज, आई थिंक दैट्स समथिंग गाबर मार्टे आल्सो सेड कि we have a tendency, especially I think geared towards men or you know boys, कि you know आपको it's always trying to correct the behavior rather than you know addressing the emotional needs. और हम लोगों को बिकॉज आई फील कि हम लोगों के बचपन में जो था ना, कोई गलत चीज किया तो उसके ऊपर टोका जाता था, rather than ये पूछा जाए कि तुम इस तरह कर क्यों। सो आई थिंक मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्सपैंड कर रहा हूँ इस चीज को, लेकिन ऑल आई थिंक माई क्वेश्चन फॉर एवरीबडी इज, you know, first off, why aren't we being as open with everybody else? And if so, you know, how do we actually communicate with each other? Again, excluding this group, because हम लोग तो आपस में I think बहुत सारी ऐसी बातें कर लेते हैं openly जो हम नहीं कर सकते, but you know, maybe the rest of you can explain or you know go over why, how do men actually communicate with each other? What हम लोग कौन सी बातें कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते, वो क्या डायनामिक्स है जो हमें रोकती हैं या हमें पीछे हमें कहती है कि नहीं यार ये इतना ज्यादा कोई बात करने की जरूरत नहीं है इसकी चीज। अच्छा, मेरे इसमें मेरा एक्सपीरियंस है कि एटलीस्ट माय रिलेशनशिप टू ईच ऑफ यू इंडिविजुअली एंड टुगेदर, इट्स नॉट दैट कि मैं अपने दफ्तर में जरूर थेरेपिस्ट होऊंगा इन माय ट्रेनिंग एंड हाउ माय माइंड इज, आई मे बी दैट, बट इन माय रिलेशनशिप्स विद माय ओन फ्रेंड्स एंड इन दिस रूम माय रिलेशनशिप्स गो मेनी इयर्स एंड डेकेड्स विद ईच वन ऑफ यू। लेकिन उधर भी इट वाजंट दैट आई हैव बीन एबल टू ओपनली रिवील माय सेल्फ, एंड बहुत सारी चीजें हैं दैट एवरी टाइम दैट इंक्रीजिंग एक लेट्स से दर्जे में मैंने कोई चीज रिवील किया, मैंने खुद क्वेश्चन किया कि यार ये मैं पहले क्यों नहीं बोल सका, या इसमें ऐसी क्या बात थी कि मैं क्यों नहीं कर सका। सो इवन इन सो आई वांट टू पुट दैट आउट देयर दैट it's not that for me the starting point always was that in this friendship मैं 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले भी ऐसे ही था, but in even these friendships I think there's a process of evolution, and with every step towards that I feel more comfortable, I feel more held, I feel कि ये बातें मैं कह सकता हूँ। I have then questioned that यार ये बातें पहले क्यों नहीं कह सका, and if someone like me who probably is very privileged के मेरे लिए कहीं आसान है, मैं लोगों के साथ प्रोफेशनली ये काम करता हूँ, अगर मैं ये कर नहीं पा रहा या मैं नहीं कर पाया, then how must it be for other people who don't have access to this group, who don't have this education, who don't have this self-awareness? So I mean maybe we can start from that हम what are some of those personal factors? So एक क्वेश्चन और भी है मेरा। आप लोग एज आई अंडरस्टैंड एज अ थेरेपिस्ट आप लोग भी थेरेपी में होते हैं और सुपरविजन भी हो रही होती है। सो स्टिल इन दैट थेरेपी ऑल्सो, व्हेन आई वाज इन थेरेपी तो आई वाज इवन नॉट एबल टू ओपन अप विद माय थेरेपिस्ट एज वेल एज मच एज आई शुड बी। तो आप लोगों का क्योंकि एक्सपीरियंस भी ज़्यादा और आप लोग क्योंकि लाइन भी यही है, सो क्वेश्चन इज कि आर यू एबल टू ओपन अप इन फ्रंट ऑफ मेल थेरेपिस्ट जितना ओपन अप होना चाहिए, जितना कम्युनिकेट करना चाहिए, कि वहाँ पे भी डिफेंसेस हैं कि यार ये नहीं बता सकते? मुझे तभी भी फील होता है कि आई जस्ट कैन नॉट
I do, but I think I should. I cannot. I think I can add to this. I can somewhat relate to it, but I can add to this. At least जब मैं therapy में था, तो I started with a female therapist, and she was quite good as well. And there have been 2 or 3 therapists in my life, and they started with being a female. But वो एक point definitely दरमियान में आ गया था, and not so late into the therapy. कुछ ऐसी बातें थी जो कि मैं at least I didn't feel comfortable sharing them. क्योंकि वो जजमेंट वाला एक फैक्टर जो था, एंड ऑफ कोर्स बीइंग अ फीमेल एट द अदर एंड, वो जिस तरह की एक परवरिश है, आप ब्रिंगिंग है, तमीज और लिहाज है, एटलीस्ट आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ एंड लाइक माइंडेडनेस, आई थिंक तौसीफ के साथ भी इस तरह ही कि कुछ जरा तरीके से जरा लिहाज करके जो है वो बात करते हैं, शुगर मिला अपनी जगह, बट ये कि ओपन अप होना, उस तरह की वो वाली बातें करना, वो कनेक्ट करना, वो डेफिनेटली दैट वाज अ वेरी बिग थिंग मिसिंग, एंड दैट वाज समथिंग दैट एटलीस्ट आई वाज लुकिंग फॉर विद रिस्पेक्ट टू माय थेरेपी. और हमारे प्रोफेशन के अंदर जो है वो अनफॉर्चुनेटली मेल थेरेपिस्ट समहाउ, मैं थेरेपिस्ट की बात करूँ, मैं साइकोलॉजिस्ट की बात नहीं कर रहा, वो अलग चीज है, बट ये है कि वो उस तरह के थेरेपिस्ट मेल थे ही नहीं. और एंड आई रिमेम्बर कितनी मुश्किलों से जो है वो हमने ढूंढा था. मैंने अपने सुपरवाइजर के थ्रू जो है वो फिर एक मेल थेरेपिस्ट मिला था, एंड इन माय लाइफ दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई डिडंट फील दैट जजमेंट. और उसमें उस थेरेपिस्ट का एक बहुत बड़ा रोल है, वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर देना, एंड नॉट जस्ट बाय रिपीटेडली कहते हैं ना, आपको लफ्जों से कहना कि दिस इज एन ओपन स्पेस एंड यू आर इनवाइटेड टू बी ऑल ओपन, वो ये वाली बातें एक्चुअली बहुत कम उसने की है मेरे से. इट्स जस्ट हाउ ही कनेक्टेड, आई कांटेक्ट रख के विदाउट सेइंग थिंग्स. उसका एक नॉड भी जो होता था, उसने एक स्पेस ऐसी बना दी जिसमें वो अगर नॉड भी करता था ना, तो इट इंस्टेंटेनियसली मुझे लगता था कि इसको मेरी बात समझ आ गई और मुझे ज्यादा डिटेल में उस तरह जाने की जरूरत नहीं है. ये नहीं कि मैं जा नहीं सकता, बट जरूरत नहीं, समझ गया. तो वो जब आप कनेक्शन जब आप फील कर लेते हैं ना थेरेपिस्ट के साथ, व्हिच आई वाज एबल टू डू वेरी फॉर्चुनेटली, बट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो वो मेरे लिए फिर बहुत इट ओपनड अप एन एंटायर वर्ल्ड, जो कि मैंने एटलीस्ट कॉन्शियसली एंड लॉट ऑफ इट ऑफ कोर्स अनकॉन्शियसली दबा के रखी हुई थी कि ये बातें जो है ना, जो मर्जी हुए मैं नहीं कर सकता. मैं एक आदमी के साथ जो नहीं करता, औरत दूर की बात है, बट आदमी के साथ भी शायद जो है ना, मैं उस तरह कंफर्टेबल नहीं हुई बात करने के लिए. एंड वो इतना बड़ा चंक मिसिंग था, बिकॉज वो इतना बड़ा वो हर्डल आ गई थी कि वो थेरेपी प्रोग्रेस करना है, तो नेक्स्ट स्टेप है ना, मेरी अपनी जो ग्रोथ है वो इतनी हिंडर हो गई थी, बिकॉज उन चीजों के बारे में मैं बात नहीं कर सकता था. एंड थोड़ा सा अगर कोई पॉइंट आउट करने की कोशिश करता था फीमेल थेरेपिस्ट, तो आई यूज्ड टू शट डाउन. And no disrespect once again to the female therapist there, but it's just कि वो connect नहीं मैं कर पाता. तो वो फिर जब मेल थेरेपिस्ट ने वो खोला, so it really sort of helped me in that particular way. तो जजमेंट वाली जो आप बात करें, वो डेफिनेटली एक जजमेंट है. हम उस तरह बात वो नहीं कर सकते, हमें वो लैंग्वेज भी नहीं सिखाई जाती कि किस लैंग्वेज में जो है वो बात करनी है, क्योंकि हमें वो एक्सप्रेस नहीं करना आता. तो हम फिर शेयर्ड एक्टिविटीज कुछ ढूंढते हैं, और उस शेयर्ड एक्टिविटीज के अंदर जो है ना, कुछ दबे छुपे तरीके से हम अपनी कुछ बात जरा, एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ कि जरा सार्केज्म के थ्रू जो है ना, सो पुटिंग इट आउट देयर इन अ वे जिसमें मजाक भी लगे, लेकिन अगले को बात भी समझ आ जाए. और अगर बात समझ आ जाए तो शायद वो उस हिसाब से मुझे कोई जवाब दे भी दे, लेकिन अगर जवाब ना दे तो मैं कहूँ कि यार मैं शुगर लगा रहा था. सो सार्केज्म की वो एक विंडो होती है ना, मतलब कि वो एक बैरियर आप लगा देते हैं, जिसमें फिर अगला बंदा जो है वो अगर आना चाहे, अगर तरीके से आना चाहे, तो वो आ सकता है. So that's been at least my experience with respect to therapist की मैंने ज्यादा बात की है, but ये कि overall that relationship with males and यहाँ जैसे इस जगह पे जो है coincidentally उमर भी बैठा हुआ है, आप भी बैठे हुए हैं, आप लोगों के साथ जिस तरह मैंने कनेक्ट किया है, तो आप लोग भी मुझे समझते हैं कि that's how I sort of talk हल्के फुल्के तरीके से. अब बहुत बेहतर हो गया. अब तो ये कि जो not still whatever I feel, but lot of what I feel I can sort of share with you guys, but still वो एक होता है कि यार completely नहीं, and I don't think that's completely wrong, but ये perception होता है ना, हम जो आपस में भी एक दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, या if a man is thinking about can I say this to a female therapist, एक perception की बात ही है ना. Technically speaking, just like Rana साहब said, कि
ट्रेनिंग तो थेरेपिस्ट की यही है ना कि जजमेंट नहीं आपने करना, दूसरे को सेफ्टी देनी है. सो इवन द फीमेल थेरेपिस्ट शुड बी एबल टू प्रोवाइड दैट, बट देन इट्स आवर परसेप्शन दैट हाउ आर वी फीलिंग अबाउट दैट. एंड आई एम अज्यूमिंग कि लेट्स से कि अगर लेट्स से अब उमर मेरा मॉन्टेसरी का दोस्त है एंड आई हैव नोन हिम फॉर मोर देन 30 years, आई शुड बी एबल टू से एनीथिंग टू हिम. बट इवन विद हिम, I think over the years, over the decades, very slowly it has gotten to a place which is कि यार इसको ये वाली बात मैं कह सकता हूँ. And then Umar himself may have pointed out कि यार ये वाली बात पहले क्यों नहीं बताई. So it might have just been about that perception that somewhere we are thinking that how will the other person receive this? Can they understand this? या अगर मैंने ये कह दिया, there's that perceived rejection, or there's that perceived, I don't know कि और क्या हो सकता है which sort of inhibits कि हमने ये बात बोलनी है या नहीं बोलनी. Yeah, I think वो एक inherent हम लोग को वैसी bias है, whether that's cultural, whether हम लोग को जैसा उमर लतीफ भी कह रहा था, बल्कि राना साहब आप भी कह रहे थे कि आप इतने ज्यादा खुल के नहीं कह सकते. Specifically, I mean, my first therapist was also a woman, और I think the last session I had with her, मुझे एक चीज realization हुई थी और मैंने उसे कह दिया था, and I think उसके बाद I stopped going because that realization hit me hard. कि मैंने उसे कहा था कि I feel like the responses that I'm giving to you are somewhat biased. It's almost like मैं construe करके जो है ना आपको एक वो तस्वीर दे रहा हूँ जो मेरा नहीं ख्याल इतनी authentic है. It's, I mean, I'm expressing myself very openly. मैं बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के आ रहा हूँ, but जो मुझे जिस किस्म की करनी चाहिए ना वो मैं उस तरह एक्सप्रेस नहीं कर रहा. मैं कुछ ना कुछ जो है ना चीजें घुमा फिरा के कर रहा हूँ. So I actually want to, I think हम लोग थोड़ा सा थेरेपी के ऊपर आगे चले गए. Let's go step back just a little bit on that. I mean, why do we feel then there would be a need to go to therapy? Maybe if I can start with, why go there at all? Because clearly it's very difficult for us to express things with other people. So I think उमर तुमने भी यही कहा है कि अब आके जो है तुम्हें थोड़ा सा you figure out how to express yourself very openly, but वो उधर biases हैं. So मेरा अपना I think जो है ना my idea around why we can't generally express and why we feel there's a need to go talk to somebody specifically is because कि हम लोग, I don't know, I think ये जो शुरू में बात हुई थी ना, there tends to be that judgment. But why are we judging each other so much? Is that because के I mean, मुझे honestly ये पता है कि अगर किसी को फर्ज करें there's a person, acquaintance है, right? अभी recently मेरे साथ ये होता, I met an acquaintance after a very long time, उसे बहुत पहले जानता था, and I started being very open with them. मैं अपने बच्चे का बता रहा हूँ and I'm being everything, right? But immediately my response was कि अच्छा, what about you? I need to know because I felt like I've revealed too much. I need to immediately know कि तुम क्या कर रहे हो, वरना I feel like वो थोड़ा सा imbalance हो जाएगा हमारे में, या मैं बहुत ज्यादा बता दूंगा, उसने मुझे कुछ नहीं बताया, and he'll be like judging me and all of that. ये मेरा thought process चल रहा था. I don't know if you have the same experience, talking whether it's strangers, whether it's close relatives. But वो एक मुझे हमेशा fear होता है कि यार ये थोड़े से imbalance हो जाएगा, मैं बहुत ज्यादा बता दिया ना तो वो Godfather में भी है ना, I think never let anybody outside the family know what you're thinking, right? So I think वो भी एक notion है कि no, don't reveal too much. You can't trust anyone. There's a trust element. I don't know. I mean, I think there's just generally मुझे feel होता है कि for me specifically, it's, I don't know, I just feel like there shouldn't be an imbalance in information given and shared. मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूँगा कि आई थिंक ये जो आप कह रहे हैं जनरल फियर जो है, आई थिंक एटलीस्ट इन आवर कल्चर शुरू से ये चीज़ बहुत ज़्यादा हमारे अंदर इंजेक्ट की गई है कि आपने ओपन अप नहीं होना. अभी हम कुछ देर से बातचीत कर रहे हैं कि हमसे ओपन अप हुआ नहीं जा रहा, तो पहला क्वेश्चन ये है कि हमने क्यों ओपन अप होना है. जो चीज़ें हमारे दिमाग में फंसी हुई, दिल में फंसी हुई, ये हम चारों का तो एक डिस्कशन भी चलती रही है, तो हम उस जर्नी में शायद थोड़े से आगे हैं. बट लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स, उनका क्वेश्चन है कि जी ये बोलना, या अगर चीज़ें मेरे हैं तो मैंने क्यों बतानी है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो चीज़ें हमने छुपा के रखी हुई हैं, दबा के रखी हुई हैं, ये साइकोलॉजिकली आप तौसीफ शायद बेहतर बता सकते हैं कि इनको क्या वाकई डू वी एक्चुअली नीड टू ओपन अप. अभी मैं एक क्रिज्मा एकेडमी का कुछ देख रहा था, तो उसमें भी वो ये कहते हैं कि जी अगर आपने अपना वो रखना है, रिज रखना है आपने कि आप बड़े वो हैं, तो आप खामोश रहें, मिस्ट्री क्रिएट करें. अब वो बचपन से हमारी अजीबोगरीब सी इस तरह की ट्रेनिंग्स हुई हुई हैं जिसमें ये कहा जाता है कि जी जो ओपन अप हो रहा है दैट इज नॉट गुड. तो अब एक कॉन्फ्लिक्ट भी है
कि मुझे फीलिंग है कि यार एक चीज़ फंसी हुई है, मुझे आई हैव टू स्पीक अबाउट इट, आई हैव टू टेल समथिंग, एक इमोशन है या कुछ है, साथ ही वो एक कॉन्फ्लिक्ट कल्चरली या आई डोंट नो वो भी चल रहा है कि ओपन अप होना है कि नहीं होना, वो तो बात की बात है किसके साथ ओपन है, तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और उसी के बीच में एज तौसीफ उमर ऑल्सो सेड के बोलना चाह रहे हैं नहीं बोल रहे, तो कितनी सैड बात है, हर घर के अंदर इतने इवन मेन और मेल फीमेल दोनों कितना कुछ दे वांट टू शेयर, किसी को कुछ बताना चाह रहे हैं, लेकिन सिर्फ इस फियर ऑफ जजमेंट के यार मैंने, और शायद कभी कभार होता है हम भी बोलते हैं बोलना शुरू करते हैं और अगले का थोड़ा सा कि एक वो इमोशन या ऐसा एक नॉड या से डर जाते हैं हम, वो ये गलत हो गया, मैंने बात करके ही गलती कर दी, मैंने बात स्टार्ट करके ही गलती है। एक आई एम नॉट ट्रेन टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, क्योंकि वो बचपन से कल्चर ऐसा चला जा रहा है कि हमें बताया ही नहीं गया कि अपने एक्सप्रेस कैसे करना है, तो उसके एक फियर में मैं जो थोड़ी सी कोशिश करता हूँ, जो बाकी मेरे इर्द गिर्द हैं जिन्होंने सुनना है, दे आर ऑल्सो नॉट ट्रेंड कि उन्होंने ये जो मैं ओपन अप हो रहा हूँ उसको कैसे लेना है। तो वो एक बड़े लेयर बाय लेयर हम फंसे हुए हैं कि ट्रेनिंग उनकी भी नहीं है सुनने के लिए, हमारी भी नहीं है कि किसी ने कोई अगर अपना एक अजीबोगरीब सी बात लेकर आ गया, मैंने उसमें रिस्पॉन्ड कैसे करना है, क्योंकि मैंने कभी ना मुझे किसी ने रिस्पॉन्ड किया होगा तो मुझे पता होगा ना किस पे कैसे रिस्पॉन्ड करना है। सो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। एक करना है, ओपन अप होना है कि नहीं, अगर होना है तो किसके साथ होना है और कैसे होना है, और अगर वो उसका ऐसा जवाब दे देता है जो मेरी उसके मुताबिक नहीं है, मेरी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो फिर तो मैं बिल्कुल ही जैसे उमर कह रहे हैं शट डाउन हो गया, आप कहेंगे अब एक दफ़ा तो आप ओपन किसी और से भी गलती नहीं होगी पूछेंगे। आइंदा नहीं मैंने, तो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी सैड एक्चुअली, वेरी सैड कि आप देयर इज समथिंग यू वांट टू टेल एंड देयर इज नो वन यू कैन डिस्कस दैट। एंड अगेन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कोई कॉम्प्लिकेटेड कोई बचपन के चाइल्ड अब्यूजेस की बात नहीं हम कह रहे हैं, दैट जनरल इमोशंस, जनरल थिंग्स दैट वी जस्ट कैन नॉट टॉक अबाउट, वेरी एवरीडे इंटरेक्शंस। आई थिंक इसमें एक तो वो एक स्टेरियोटाइप है ना जो आई थिंक बोला भी जाता है कि अच्छा मर्द जो हैं वो नॉन इमोशनल होते हैं और खवातीन इमोशनल होती हैं, मर्द जो हैं रैशनल लॉजिकल होते हैं। सो आई मीन दैट एंटायर थिंग दैट men do not feel and they don't have emotions. So I mean when I started working, and I think that then perpetuates into the field as well, that अगर आप साइकोथेरेपी की फील्ड देखें, मैं जब अपने काउंसलिंग की ट्रेनिंग में था, मेरी क्लास में अगर 60-70 लोग थे, उनमें से 3-4-5 मर्द थे, बाकी सारी खवातीन थी। और अगर आप लोगों की भी जो ट्रेनिंग्स हैं, मैं उनमें किसी न किसी तरह इन्वॉल्व रहा हूँ, मुझे उधर भी पता है कि हर 20-22-23 लोगों की क्लास में से 2-3-4 मर्द हैं, ज्यादातर खवातीन हैं। एंड दैट्स हाउ द फील्ड इज, इट्स अ वेरी वेरी फेमिनाइज्ड फील्ड, एंड देन दैट आइडियाज परपेचुएटेड कि अच्छा that is because they feel they know emotions better, they talk to each other, मर्द हजरात ना फील करते हैं। But here's the very interesting thing that happened, that as soon as I started working, I have never struggled to talk with men. मतलब when I receive male clients, कभी ऐसे नहीं हुआ कि मुझे उनको धक्के देके उनको उनके तिरले मिनते करके उनको बोलना पड़े, एंड यू हैव टू टीज आउट दोज इमोशंस ऑफ देम। दे वेरी ओपनली टॉक अबाउट इमोशंस। तो मुझे कभी भी कोई थेरेपिस्ट या कभी कोई कहे कि यार व्हाट इज विद मैन, मैन डोंट टॉक अबाउट इमोशंस, मैं कहता हूँ जी आपसे नहीं करते होंगे, मेरे से तो बिल्कुल ठीक करते हैं। सो आई थिंक देयर इज समथिंग अबाउट दैट व्हिच इज दैट एक स्टेरियोटाइप है, फिर हमने एक बिल्कुल एक तरह से ब्रेन डिफरेंस बना दिया कि ये मर्दों के ब्रेन जो हैं वो काम ही नहीं करते इस डायरेक्शन में, खवातीन के ब्रेन काम ज्यादा करते हैं इस डायरेक्शन में। एंड देन we have from a very early age, just the other day I saw that एक बच्चा जो है वो एक सड़क पे गिरा था, और फौरन someone sort of just got up and said नहीं नहीं खैर है, you're a strong boy, कोई ऐसी बात नहीं। It's such an ordinary experience, हम सारों ने हजारों दफा ये देखा हुआ है, या हो सकता है खुद भी किया हो, कि we immediately for a boy there is that sense which is के crying या emotion या कोई भी उस तरह के, we will put that down consciously and unconsciously, and I think that I didn't grow up any differently from that, and I think अगर मेरी थेरेपी की एजुकेशन और वो सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी ना होती, I would have turned out just the same. Yeah. Just very quickly, I think ये जो common theme आप लोगों ने बातें की है ना, एक चीज जो नजर आ रही है कि I mean, two things I want to point out. One is people who actually come to you for therapy, men. वो तो already, because I mean, I think you can explain this better, but when somebody comes to you for therapy, it's because they are prepared and they are willing to express themselves like that, right? Normally, आपको, I mean, honestly, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ don't go for therapy, and I feel like they are, I mean, they desperately need therapy. ज्यादातर तो हम लोग को because we can afford it, we are aware of it, इसलिए हम लोग चले जाते हैं.
लेकिन आम जो आपके मर्द हजरात हैं उन लोगों के लिए तो ये तस्वर भी नहीं है. आई थिंक दैट वो जो पुराने जमाने के स्टेरियोटाइप्स थे कि नफ्सियात के पास जा रहे हो, वो तुम्हें कोई दवाई दे देगा, साइकाइट्रिस्ट से, अभी तक आई थिंक ज्यादातर वो एक होता है. देयर इज आल्सो दैट सेंस ऑफ शेम कि तू इतना कोई कमजोर है, इतना माड़ा है, तुझे इतने छोटे मोटे मसले, कुड़ियों वाले मसाइल जो है तू खुद से नहीं हैंडल कर सकता, तुझे थेरेपिस्ट के पास जाना है. आई मीन अगेन दीज आर वेरी आई गेस आउटडेटेड, और हमारे लिए शायद वो इतने ज्यादा रेलेवेंट ना हो, लेकिन वो नोशंस अभी तक हमारे अंदर है. And I'm saying that because I think you pointed this out as well, कि before you couldn't, because all of us were brought up in that cultural मतलब कि हमारे ऊपर उस किस्म की restrictions थी कि आप इतने ज़्यादा openly express नहीं कर सकते. So I think that is a challenge, वो अभी तक है. So मैं वही कह रहा हूँ कि so I think that actually brings us to the question, because यही थी बार बार आ रही है कि why should we then go to therapy? Why do men generally need to go to therapy? And I would actually argue that men need to go to therapy more so than women. Because I think खवातीन के लिए जो है, again maybe I'm being stereotypical, but they have that network. वो आपस में जो है ना कुछ चीजें वो इतनी open express मर्द नहीं कर सकते. They actually need therapy a lot more than women, and yet हम लोग के अंदर वो इतनी ज्यादा reservations हैं to actually openly express. Even हाँ ठीक है, again जो लोग तुम्हारे पास आ रहे हैं वो तो they're an exception, right? Because they've decided they need therapy and they're open and willing to express it at that. My question is, what about men who need it but are unable to go? उन्हें क्या कहोगे फिर? मुझे एटलीस्ट ये भाईचारे के लिए वन ऑफ माय मोटिवेशंस इज जस्ट दैट, व्हिच इज एक पाकिस्तान जैसी कंट्री में थेरेपी विल नेवर बी स्केलेबल. Maybe in another 20 years we may have a different conversation. लेकिन आज में हमारे पास, एक दफा मैंने एक स्टैटिस्टिक पढ़ी थी कि पूरे एक बलूचिस्तान प्रोविंस के लिए एक शायद फीमेल साइकाइट्रिस्ट है. वी हैव वेरी सॉर्ट ऑफ स्क्यूड नंबर्स लाइक दैट. आज भी अगर कोई मेरे से पूछे लाहौर में आप मुझे 20 थेरेपिस्ट गिनवा दें हु यू ट्रस्ट, आई वोंट बी एबल टू फाइंड दोस 20 थेरेपिस्ट. या आज भी मैंने जब काम 2012 में शुरू किया था, I at least didn't know male therapists, psychiatrists थे, psychologists थे, therapists में मेल तब नहीं जानता था. आज वो ये है कि वो नंबर अगर एक वक्त में खाली 1 या 2 था, वो 3 या 4 हो गए होंगे. थेरेपिस्ट उस वक्त में हम जो एक दूसरे को जानते थे 4, 5, 6 थे, अब वो 20 हो गए होंगे, which is our network of people. So I think that is an important thing, that we are also sort of gravitating towards that can some of these things be talked about in men with men in that ordinary way, कि एक भाई एक और भाई से बात कर सके, एक दोस्त से बात कर सके, एक टीचर स्टूडेंट में कॉन्वर्सेशन हो सके. होपफुली आई मीन फादर्स एंड सन्स कैन ऑल्सो टॉक अबाउट दैट. एंड वो वाली चीज हमने भी आपस में बात की थी कि यार हमारी लाइफ पे देयर वर सर्टेन पॉइंट्स जिधर अगर एक इफ देयर वर अ ट्रस्टेड स्पेशली मेल फिगर, and we insisted on that had to be a male figure, that what we were struggling with at that point, we could not sort of relate that to a woman. It would have been a lot more comfortable अगर एक बड़ा भाई होता है या कोई बड़ा cousin होता है या किसी से हम बात कर सकते. So I think a part of what I want to hopefully achieve out of our conversations also is to start these conversations between other men, that people can sort of just challenge that कि यार ये मैं बात क्यों नहीं कर पा रहा. But having said that, obviously therapy is a very different space. That let's say that there are some things, for example, as much as we sort of look away from that, that child abuse is something, it's not a gendered thing at all. In my experience, I think child sexual abuse is probably as common in the male child as it might be towards a female child. And my experience of working with men across very, very different educational backgrounds, very well settled in their lives, but who are showing up with alcoholism, who are showing up with addictions, who are showing up कि मेरी family कहती है कि मैं चीखता ज़्यादा हूँ, मुझे गुस्सा ज़्यादा आता है, मैंने अपनी बीवी को मारा. Any of that, I mean, they come in, it seems like they're coming in with those problems, that I'm a wife batterer, I'm an alcoholic, I'm abusive, I'm this, I'm that, and that. काम नहीं हो रहा, procrastinate कर रहा हूँ. But under the hood, under the surface of all of that, almost always there's abuse and trauma. So वो वाली conversations, I'm presuming that if let's say if you are sort of thinking कि यार ये मैं अपने best friend से
करूं, it could be also could be a big risk that you talk and let's say if they turn you down and they don't have the right reaction, और जो एक हमारा एक राइटिंग रिफ्लेक्स होता है कि यार चल यार खैर गुजर गया अब, या चल अब क्या वो पुरानी बात हो गई, या चल शुक्र है, या आई डोंट नो क्या डंडे लेके चल पड़ते हैं, चल उसको जाके मारते हैं, या व्हाटएवर. आई मीन they will very quickly when it comes to uncomfortable emotions, हम उनको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि यार अब क्या करना है इस बारे में. whereas in therapy that can be that supportive space कि instead of correcting something, it's more about understanding it, it's more about opening it up, it's more about that how has this affected you. And obviously trained therapists have spent years and years to know कि आपसे कैसे बात करनी है. तो कुछ चीजें obviously are more suited to be taken to therapy. Let's say कि if someone has some symptoms which probably are more likely to be of a mental illness rather than something that is very relational या something shame based या something solution oriented कि यार मुझे समझ नहीं आ रही कि ये वाली I don't know मेरे नौकरी पे दिल नहीं लग रहा, या मेरी अपनी वालदा से कॉन्फ्लिक्ट है, मुझे समझ नहीं आ रही उन्हें मैं किस तरह से ये बात कह सकूंगी ये मैम कि मुझे अच्छी नहीं लग रही. I mean some things might not always be suited to be taken to a therapist. They can be equally spoken to a friend or to someone who's willing to understand you, but then obviously some things may be best suited to taken to a therapist. I think इसमें अगर मैं एक बात करूं, उमर ने काफी अच्छा डिटेल बताया, लेकिन उमर तेरी बात पे जो है वो ट्रस्ट डेफिसिट वाली जो बात है कि मैंने अगर इसे शेयर कर लिया तो आई नीड टू नो समथिंग अबाउट हिम. थेरेप्यूटिक स्पेस में ये रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज दैट्स अंडरस्टूड कि he or she is non-judgmental, is unbiased, confidentiality रूल नंबर 1 वैसे ही है, तो वहाँ वो वाला एलिमेंट जो है ना वो आता नहीं है. तो सपोर्टिव ग्रुप या सपोर्टिव दोस्त होना जो है, और जैसा वो कहते हैं ना कि कहते हैं अच्छा यार हो जाता है, इसको कर लेंगे, ठीक है, ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास दैट्स द थिंग, क्योंकि हमें वो चीज सिखाई उस तरह नहीं गई कि सिचुएशन को जो है वो डील किस तरह करना है. इसका जवाब बेसिकली क्या होना चाहिए कि अच्छा यार हो जाएगी, क्या पता शायद अगर बात छोटी हुए या बात इस तरह की हुए, देयर माइट बी नीड कि अच्छा कि अगला बंदा सिर्फ इतना ही कहता कि यार ये वक्त गुजर जाएगा या मैनेज हो जाएगा. सो मे बी दैट, बट लॉट ऑफ थिंग्स जिसपे ये वाला सेंटेंस जो है वो एक्चुअली काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है, और अगला बंदा जो है वो और दब जाता है कि यार इसका मैं क्या करूं, लाइक आई एक्चुअली वांट अ सॉल्यूशन टू दिस, या एटलीस्ट कोई पर्सपेक्टिव, कोई चीज नजर आए जिसके ऊपर जो है कुछ कर सके इस बारे में, क्योंकि मुझे इसके अलावा कोई चीज समझ नहीं आ रही. तो वो अगर अगला बंदा शेयर नहीं कर रहा, हु इज नॉट अ थेरेपिस्ट, तो वो ऑटोमेटिकली जो है एंड समहाउ आई थिंक अनकॉन्शियसली हम वनरेबिलिटी की कंडीशन ये है कि अगला बंदा भी वनरेबल हो. ठीक है, और आई थिंक शायद तौसीफ इस बात से रिलेट करेगा, आपका क्लाइंट भी जो है वो आपसे तभी कनेक्ट करेगा जब वो आपको वनरेबल दिखेगा, वरना वो कनेक्ट नहीं करेगा उस तरह. आप उसको कोई भी कह रहे ना, जिसमें पहले थेरेपी के बारे में कहते हैं, आप सेंटेंसेस ये बोल दें कि दिस इज अ सेफ स्पेस, एंड ठीक है आपको बोलना भी चाहिए वक्तन वक्तन जहां जरूरत पड़े, but you have to act that particular sort of part. Either you're willing to be vulnerable in front of that particular person to an appropriate extent, of course. लेकिन ये कि तो वो वाली चीज जो है वो आपको जनरली शायद जरा कम महसूस होती है. और जो रिएक्शंस की जो बात कर रहे थे ना कि वो रिएक्शन हम देखते हैं और कोई हमारे टाइप का नहीं होता, तो वो उसको भी मैं अगर इस बारे में सोचता हूँ कि जब हमने इस तरह की कोई चीज पहले शेयर की होगी, बिकॉज वंस अगेन हम जब पैदा होते हैं हम इस आहिस्ता आहिस्ता हम सीखते हैं कि चीजें जो शेयर नहीं करनी है, चीजें दबा के रखनी है. फ्रॉम द आउटसेट इन अ वे वी आर ओपन, तो वो चीजें शेयर ना करने की वजह भी जो है क्योंकि हमने जब कहीं शेयर की होती है तो वो हमने रिएक्शंस देखी होती हैं उसके ऊपर, और वो जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं वो हमने देखे होते हैं, और वो जिसको कहते हैं ना अच्छी तरह गड़े हुए होते हैं हमारे दिमाग के अंदर. और कहीं भी हल्का सा अगले की फेशियल एक्सप्रेशन इस तरह चलता है तो फौरन जो है ना हम रुक जाते हैं, ओह यार ये क्या कर दिया, या ये बात करने की जरूरत ही क्या, फिर अपने आप को ही कोसना शुरू कर देते हैं. हालांकि बड़ी मुश्किलों से हमने एफर्ट करके वहां तक पहुंचे होते हैं वेयर वी वांट टू टॉक अबाउट इट, बट उसकी दो कंडीशन ये आ जाती है कि अगला बंदा जो उस तरह की रिएक्शन ना शो करे, ठीक है, और दूसरा ये है कि वो भी मेरे साथ तो नहीं शेयर करे, ताकि हम दोनों इक्वली वनरेबल हों और हमारे पास फॉर लैक ऑफ बेटर फ्रेज मवाद हो एक दूसरे के खिलाफ. फॉर इंस्टेंस अगर ये मेरे बारे में बात कर दे तो मेरे पास भी इसके बारे में बात करने के लिए मेरे पास भी जो है वो चीजें हुए, which is it's a very sort of sad way of looking at it. मैं ये नहीं कह रहा गलत है. Yeah, that's the realistic definition of trust. कि अगर मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कोई मवाद mutually assured destruction है ना, फिर तो आपको ट्रस्ट करना है, right? But I think ये बहुत इंटरेस्टिंग बात की है कि I think in the therapeutic space
that मतलब कि वो जो vulnerability है that is equalized. But my question is, देखो जब एक बंदा therapy पे जा रहा होता है, I mean again मेरा experience different है, like I'm talking about general people who generally go to therapy, and I think Rana Saab is also like me, one of those people जो therapy जाते हैं without that notion कि यार उस बंदे को पता नहीं trust कर सकता हूँ या नहीं. तो आप थोड़े से जो है ना basically आप शुरू में जो है ना आप तुम क्या देते हो, मतलब कि you just throw crumbs, you don't go ahead with the entire dish, you know कि this is who I am. आप थोड़े बहुत देते हो थोड़ा सा feeler आ जाए, right? So my question is कि is it because आप तो necessarily vulnerability दिखाओगे भी ना, तो it's just to equalize, to come on the same footing, right? But how do you, because I think this is important for somebody, and again I think most men who would feel like they need to go to therapy or would want to go to therapy, but उनके लिए वो trust deficit जो है ना वो बहुत मुश्किल है. So maybe it's something that, you know, their friends or peers or people who are watching who can tell them कि, you know, how do you अपार्ट, एक तो चीज मैंने बता दी कि ठीक है आप वल्नरेबिलिटी के थोड़ा सा बैलेंस कर लो, आप ट्रस्ट जो है उनके साथ बिल्ड करो, बट हाउ वुड समबडी कन्विंस देयर फ्रेंड फॉर एग्जांपल और देमसेल्व्स टू एक्चुअली गो टू थेरेपी, मतलब कि व्हाट ये अपार्ट फ्रॉम वल्नरेबिलिटी बैलेंस करना, हाउ वुड, मतलब कि हाउ डू यू मेक द अदर पर्सन स्टार्ट टॉकिंग इवेंचुअली? इज इट लाइक वो शुरू में थोड़ा बहुत आते हैं और आप उनके साथ थोड़ा सा जेरन करते हो, एंड व्हाट डू यू एक्चुअली से टू देम to get them to start talking so much? I know this is probably a broad question, but you know, I think my question is, you know, how does somebody get to a point where they feel like they need to come to therapy? तो एक्सपीरियंस तो ये है कि मैंने तो आज तक किसी को कन्विंस नहीं कर सका, अगर कोई मान जाता है, लेकिन इट्स सो हार्ड स्पेशली फॉर मेन कि इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कन्विंस एनीवन. मैन आई नो अ लॉट ऑफ केसेस जो कि चलती फिरती केस स्टडीज हैं कि यार इनको तो थेरेपी में होना चाहिए, लेकिन दे जस्ट डोंट गो. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट. इसमें एक और एलिमेंट कॉस्ट का भी है. कॉस्ट का बहुत बड़ा एलिमेंट जो है वो कॉस्ट का है. गुड मेंटल हेल्थ केयर जो है वो हमारे मुल्क में इंश्योरेंस का तो उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है, राइट? ये तो समझते हैं इस चीज को. तो वो हर कोई मिसाल के तौर पे 4, 5, 6, 7 हज़ार रुपये जो है वो पर सेशन देने के लिए वो उस जगह पे नहीं होता कि वो दे सकता है. तो एवरी वीक एटलीस्ट, एवरी वीक वो भी, राइट? इन कंसिडरिंग जो हमारे हालात हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमिकली डिटीरियरेट ही करते जा रहे हैं, तो वो बड़ा मुश्किल होता है किसी के लिए जो लेकिन कन्विंस होना और फिर थेरेपी के अंदर जाना. और दूसरी बात ये है कि ऐसे थेरेपिस्ट के पास जाना जिसके साथ आप कनेक्ट भी कर सकें, बिकॉज उसके साथ भी आपको टाइम लगता है कनेक्ट करने के लिए, अनलेस और अनटिल एट द आउटसेट वेरी सॉर्ट ऑफ विजुअल या इनहेरेंट आपको चीजें नजर आती हैं कि यार दिस इज नॉट राइट, आई फील वेरी अनकंफर्टेबल हियर. ठीक है ना? आई थिंक बड़ी इंटरेस्टिंगली हमारी जो डिस्कशन है ना उस मोड पे आई है जिसपे हम जो जैसे हमने स्टार्ट किया था, द नीड ऑफ दिस प्लेटफॉर्म और स्पेस, कि डेफिनेटली वी नीड समथिंग मोर देन थेरेपी, जिसमें जो भाई हैं, जो मेल हैं, जो दोस्त हैं, दे नीड टू प्रोवाइड सम स्पेस जिसमें दे कैन स्टार्ट ओपनिंग अप एंड स्टार्ट डिस्कसिंग. और वो जो जितने भी ब्लॉकर्स हैं जो हम लोगों ने भी क्रिएट किए हुए, जिस तरह वो कहते हैं ना, वो एक वो क्लिशे सा है कि औरत के दुश्मन होती है, इस तरह आदमी भी आदमी का दुश्मन है. मैंने ही अपने दोस्तों को मैन अप करने के लिए कहा हुआ है, वो यार कोई बात नहीं, तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा, यू आर द लीडर ऑफ द हाउस, यू आर लीडर ऑफ द गैंग और व्हाटएवर. तो वो इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दिया कि वो बंदा यानी कि इमोशंस को साइड पे करके अपनी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे फोकस कर रहा होता है. सो आई थिंक एज वी डिस्कस्ड कि थेरेपी में भी जाना डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस. साथ ही वी नीड टू क्रिएट दिस स्पेस जिसके भी हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए हमने ये इनिशिएटिव भी लिया है कि जेंट्स के अंदर ये थोड़ा सा ओपन अप होना शुरू होना चाहिए, स्पेशली इन आवर कल्चर. ये जो हमने बेवजह की कंस्ट्रेंट्स एक दूसरे पे लगाए हुए हैं कि अगर दोस्त की, आई रियली डोंट लाइक कि किसी कॉन्फ्लिक्ट को मैं किसी बाजार में या किसी मार्केट प्लेस में कोई कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो, मैं चाहता नहीं, क्योंकि मैं जस्ट डोंट वांट टू फाइट देयर. ठीक है, लेकिन मेरे ऊपर एक प्रेशर है एज ए मेल कि अगर मेरे साथ छोटे बच्चे गए हुए हैं या फीमेल्स गई हुई हैं तो आई एम रिस्पॉन्सिबल कि मैंने उधर पिटाई करके ही आनी है और मैंने वहाँ पे बदला लेकर ही आना है. अब ये वाली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेवजह की बैठे बैठाए मेरे ऊपर पड़ गई हैं, इस तरह मैं भी आगे ट्रांसफर करूंगा ना अपने बच्चों पे, अपने दोस्तों पे, भाई तुम जा रहे हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है सारा कुछ ठीक करने की. तो मैं आई थिंक कल्चरली सोशली हमें ये थोड़ी सी ये जो बेवजह की मुश्किलात हमने आपस में क्रिएट की हुई हैं, इसको भी हमें डिफ्यूज करना है, जिसकी वजह से बेवजह सिर्फ और सिर्फ
मेंटल हेल्थ जो है वो ख़राब हो रही है. नॉट एवरीवन इज इक्विप्ड टू फाइट और एवरीवन इज इक्विप्ड टू अटैक. तो अच्छा, इस वक्त में मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जो उमैर ने सवाल पूछा था, उमैर से उमर ने कमेंट किया, शुएब ने कमेंट किया, मुझे उमैर का सवाल बिल्कुल भूल गया. तो मैं पिछले एक आधे मिनट में सोच रहा था यार ये मैं बात बोलूं, मुझे भूल गया. फिर मैं लाइक यार बोल दो यार, इस पे ऐसी बोल क्या दो बात यार, है. आज से बिल्कुल 10 साल पहले, 15 साल पहले आई वुड बी थिंकिंग कि यार पता नहीं क्या सोचेंगे, बट नहीं याद ट्रू. तो नहीं याद. उमैर आपका सवाल क्या था? यार वो मेरा खुद भूल सवाल बहुत गया. अच्छा सवाल है, वो असल में बात कहीं और चली गई थी. मेरा बेसिकली सवाल ये था कि जो उमर ने बात की थी ना कि देयर्स, जब आप थेरेपी में कोई बंदा मर्द स्पेशली हजरात, बिकॉज आई थिंक हमारी ज्यादातर कॉन्वर्सेशन ये जा रही है कि बिकॉज देयर इज वो जो स्पेस है, हम लोग मर्दों को आपस में जो है थोड़ी सी झिझक होती है. देयर इज ऑलवेज दैट फियर कि हम जो जवाब देंगे, जिस तरह वेदर इट्स डायरेक्टली कुछ बोल दे या कोई इस किस्म की नजर कर दे या कोई मतलब कि ऐसी एक्सप्रेशन दे दे जिसकी वजह से हम like we completely back off, you shut down. So how do you get to that point, whether it's for yourself or for a friend or a relative, मर्द again जिससे आपको पता है यार इससे बहुत ज्यादा थेरेपी की जरूरत है, how do you bring them to the point that they actually go to therapy? इसमें जो जो सवाल जो बताए थे कि वल्नरेबिलिटी जो है तुम लोग मैच कर लेते हो या तुम लोग थोड़ी सी मतलब, क्योंकि जब शुरू में आते हैं तो इधर हवाई फायरिंग होती है, कोई nobody actually gets to the point, right? So what can you tell men generally, whether for themselves or for their relatives or friends, to create that मतलब कि conversation जहाँ पे they can bring them to a point that they go to therapy? अच्छा, इसमें एक रेफरेंस पॉइंट मेरा जरूर ये है दैट मोस्ट मेन विल रिलेट टू इट. इफ एनीथिंग अ लॉट ऑफ वुमेन, दर्जनों ने ये बात की कि उन्होंने अपने बाप को और अ मेल फैमिली मेंबर उन्होंने रोते हुए उनको जिंदगी में 2 दफा देखे. एक दफा व्हेन देयर फादर डाइड एंड एक दफा व्हेन देयर मदर डाइड. मतलब मोस्ट पीपल हैव नेवर सीन मेल मेंबर्स क्राई और एक्सप्रेस इमोशन और be vulnerable. So I mean, linking with that earlier conversation, which is that is what we saw, which is that our fathers are unemotional, non-emotional. So when we ourselves have an emotional experience, when we are vulnerable, we are very confused with that, which is कि एक चीज experience आपको हो रही है. For example, hurt is just hurt. I mean, if you injure yourself, you will experience hurt. It's a biological necessity. But reaching out to someone and saying, "Ki yaar, I experience hurt. Can I say that to them? Will they receive it? How will they feel about it?" उधर I think एक male modeling का बहुत बड़ा एक role है. How we've all been, even if that was never said to us, but it's the air we breathe, which is that be cautious. Don't say it out because no one does it. It's not the norm. It's not the male code. It's not the bro code. It's not what you do in families. It's not what you do with your father, with your friends. You toughen up and you do that. So एक वो element है. And then when in therapy, I think मेरे जो career के initial साल थे, most of the time men were coming in through a female contact. कि let's say sister or a mother or a wife is getting in touch and she's saying कि जी मेरे husband है या मेरे भाई हैं बड़े disturb है, उनकी divorce हो रही है, या मेरे father हैं, he's had a loss, उनकी wife whatever, something like that, and can you speak to them? And मैं कहता जी आप उन्हें कहें contact कर लें. They be like ये उनका number है, आप उन्हें contact कर लें. And I'd say it doesn't work that way. If they wish to contact me, आप उन्हें कहें, they're like वो नहीं मानेंगे. So, but in the recent years, I have felt, and there could be a number of factors what might have changed. I feel that one, more than 50% of my caseload right now is working with men, and they are not coming through anyone. They are coming themselves. उसमें मेरे ख्याल से चंद at least off the top of my head some things that might be changing. Even post COVID, एक जो online एक anonymity होती है कि आप अपने दफ्तर में बैठे हुए या अपनी गाड़ी में बैठे हुए या कहीं भी बैठे हुए, you can actually connect with someone. That might slightly make it easier for men to connect with a therapist. So वो एक चीज change हुई है. दूसरी मेरे ख्याल है another thing is that what we are talking about increasingly, I think that if अगर हम अपनी cultural pulse पे अगर हम if we start feeling that, I think increasingly that is being sensed within men, because we are watching more Netflix, we're sort of seeing celebrities, and there are a few Pakistani celebrities who are coming out and openly talking about masculine pain and a lot of things, and I think somewhere वो एक readiness है. So I think that one factor that I'm very increasingly seeing is that connection to be made.
that somewhere someone who is thinking just about this, and there's a possibility that some people listening to this podcast right now are just they were waiting for a conversation like this to look at men and to look at our conversations with each other, to look at how we're engaging with each other, to look at how normal this is, and then say यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ. और आज से उस मोमेंट से पहले कभी उन्होंने देखा ही नहीं है होते हुए. And that's a very realistic scenario, that what we take for granted with each other and how easily we can speak with each other, for most men, this opportunity has never existed. But the moment it does exist, my at least experience of working with men in therapies is that they don't have too many defenses once they're there. So that's what my reflections are on this. Very interesting. I want to sort of detract, and maybe this will be a segue for future sessions as well. मुझे तुम्हारी बात से याद आया, feel हुआ है. How would you describe, because I think and this goes back to something जो राणा साहब भी अभी कह रहे थे कि एक हमें जो आपका रोल मॉडल, I think भी कह रहे थे, रोल मॉडल जो है हम लोग बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी होता है. So maybe if we could go around just maybe some description of what a man is supposed to be, because I think अगर आप बिल्कुल ट्रेडिशनल चीजों के ऊपर चले जाए ना, तो मर्द जो है वो खामोश होता है, वो क्या कहते हैं, he has to be strong, he is very sigma या अल्फा, या उससे जो है बेसिकली किसी चीज की कोई जरूरत नहीं, इंडिपेंडेंट भी होता है, वो जो है सारे मसले भी हल कर लेता है, और वो रोता नहीं है. I mean, what is your description? I think maybe we can start with you, just very quick description. What do you, and again, not as a therapist, as a man, what is your role model description of a good man, or just a man? मेरे से शुरू करना. हाँ, तुमसे I शुरू. think balance. I think वो जो जिस चीज को हम मेल और फीमेल में डिवाइड कर पाए, instead of that, that's masculine and feminine, and males have both masculine and feminine, and females have both masculine and feminine. So men can be emotional and rational, and females can be emotional and rational, and I think that's where that mistake has been made कि हमने एक पूरी set of traits बिल्कुल ही हमने कह दिया कि ये masculine traits खाली males में हो सकती हैं और feminine traits खाली females में हो सकती हैं, whereas emotions are a neutral trait. They're not a feminine or a masculine trait. So I think that in a man, what we need to gravitate towards is more of that balance. We need to have that emotional awareness. We need to take men towards that, which normalizing that this is okay. I think balance वाली बात ही जो है, I think at least for me that covers it as well, कि balance वाला element definitely होना चाहिए. But there's also a part of me जब मैं ये बात कह रहा हूँ, it's leaning more towards I don't know why, लेकिन still leaning more towards the man who is strong. अब ये भी समझने की जरूरत है कि we can't be in a space जहाँ हम we are able to sort of we are breaking down and we are expressing our needs sort of repeatedly, and that's in itself is a cry for help अगर देखा जाए तो उसको in itself, ठीक है. So we want to get to a place where we are aware of our emotional needs, maybe not all of them, and that's okay. वैसी बात नहीं, मुझे तो अभी तक पूरी अपनी समझ नहीं है, I can speak for myself, but ये है कि to get to a place where I'm somewhat being the keyword here, comfortable with my own experience of sharing and then sort of taking on responsibility that is required at my end. जो मैंने responsibility लेनी है अब अपने घर वालों की, वो मैं ले सकता हूँ, ठीक है, but with the appropriate breaks as well, जानते हुए कि यार मैं भी इंसान हूँ और मेरे ऊपर भी जो है वो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मुझे affect कर रही हैं, and I can talk to sort of at least अगर अपनी फैमिली के साथ नहीं तो अपने क्लोज फ्रेंड्स, and once again lucky in that particular sort of way कि उनसे मैं बात कर सकता हूँ, और बात करके जो है ना I can sort of let out those particular sort of emotions or express those particular emotions where I cannot express them with my family and my even my siblings for that matter, ठीक है. तो बैलेंस वाला एलिमेंट जरूरी है, but leaning more towards getting to a place जहाँ we are somewhat comfortable within our own skin. Okay, I think that's the word, that phrase that comes up for me. ठीक है, राणा साहब. I think कवर कर दिया दोनों ने. वो बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल
डेफिनेटली वी नीड टू रीडिफाइन ऑल दिस, इवन ये स्ट्रॉन्ग का वर्ड जो है ये भी एक सब्जेक्टिव सी बात है कि क्या चीज़ स्ट्रॉन्ग है, जैसे आपने पूछा इमोशनली फिजिकली किस तरह, Exactly. जो रो रहा है वो स्ट्रॉन्ग है या जो नहीं रो रहा वो स्ट्रॉन्ग है, दिस इज वेरी Yeah. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो वी नीड टू रीडिफाइन ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि दुनिया चेंज होती जा रही है, सारा कुछ चेंज हो रहा है. पहले जो डेफिनेशंस थी दे डोंट वर्क एनी मोर. फर्स्ट ऑफ ऑल, चाहे वो बंदा है या बंदी है, आदमी है औरत है, वो इंसान है. तो इंसान की जो बेसिक इमोशंस हैं वो उसके साथ हैं. वी कैन नॉट डिनाई और डिफाई देम, और वो हम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं. तो आई थिंक बैलेंस एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दैट दे आर ह्यूमन बींग्स. जो उसके साथ पैकेज या बैगेज आता है बीइंग ए ह्यूमन, वो सारा एक आदमी के साथ भी है, और वो चाहे आदमी है चाहे जो भी उसका जेंडर है, रिगार्डलेस. तो आई थिंक वी नीड टू रीडिफाइन ऑल दीज डेफिनेशंस using The this reason I platform. asked this, Sorry. exactly, the reason I asked this question is because I think this definition जो आप लोगों ने दी ना, उमर तुमने कहा है कि balance, I think Latif you're saying कि like security, secure within yourself. राना साहब आप कह रहे हैं कि वो एक जनरल मतलब कि ह्यूमन पर्सपेक्टिव से भी. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखें कल्चरली जो है ना, दैट इज नॉट नेसेसरली हाउ मैन आर परसीव्ड. आई थिंक वो जो स्ट्रेंथ वाली बात है, इनसिक्योर है ना, नहीं मर्द जो नजर में होता है ना, वो ये होता है कि जो बचपन से ही जो है हर एक का ख्याल भी रख रहा है, जो तगड़ा है, जो हर चीज में फर्स्ट आ रहा है, लाइक वो बेसिकली कंपटीशन के अंदर जो है ना सबसे आगे है. सो इट्स नॉट नेसेसरली अबाउट स्ट्रेंथ, बिकॉज द थिंग्स दैट यू गाइस आर टॉकिंग अबाउट दीस आर ऑल रिलेटिव टू आवरसेल्व्स. हम लोग बहुत ज्यादा लाइक हाई लेवल बड़ी बातें कर रहे हो. जो मर्दों की जनरल डेफिनेशन आपको अगर नजर आती है ना, एटलीस्ट जो मैंने एक्सपीरियंस की है, वो ये कि इट नीड्स, आपको फर्स्ट आना है, आपको सबसे स्ट्रांग होना है, आपको सबसे प्यारी औरत से शादी करनी है, आपने सबसे ज्यादा पैसे वाली नौकरी करनी है या सबसे ज्यादा बड़े. सो इट हैज टू बी लाइक यू हैव टू बी एट द टॉप ऑफ योर गेम, इस राइट? डेफिनेशन के मुताबिक तो अ मैं कर नहीं मैन्स रहा. मैन. यू नो, आप अगर लड़ाई भी करते हो तो आपने सबसे ज्यादा कुट लगानी है, ठीक है? सो मैं ये कह रहा हूँ कि आई सारा थिंक वो करा दिया. कंपटीशन का एलिमेंट आ रहा है rather than the balance element and security element, right? So how do you reconcile that? How does a man who needs to find that balance and who's stuck in a culture जहाँ पे या in environment, not just culture, I think ये पाकिस्तान की दुनिया भर में है. आपको पता है कि it's a मतलब कि रियलिज्म के अंदर वापस दुनिया जा रही है कि आपको might is right, and everybody जो generally insecurity जो आपने बात की थी ना, you have to be secure with yourself. लेकिन आप जिस भी मर्द को एटलीस्ट मैं देखूं ना, वो आजकल whether it's somebody acquaintance who I meet randomly in the street, or it's a colleague I'm working with, or it's a friend, there is that general sense of insecurity, whether it's because के हालात आजकल बहुत खराब है, या आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा for your family, for yourself. That sense of insecurity is driving us more towards the need to sort of exceed and be stronger and be that. So how do you reconcile between finding a balanced, secure human who's in touch with himself, and somebody who needs to like put these things apart and just like go straight for the kill and just be the strongest and the fastest? प्रोसेस है ना, एक ट्राइबलिज्म, हमारी कॉमन एंसेस्ट्री तो ट्राइबलिज्म ही है ना, दैट सॉर्ट ऑफ एक पिरामिड की तरह है, दैट समवन इज ऑन द टॉप एंड दैट सॉर्ट ऑफ ट्राइबल लीडर हैज ऑल द पावर एंड दे हैव एक्सेस टू ऑल द वुमेन एंड दे सॉर्ट ऑफ कॉल द शॉट्स. एंड आई मीन दैट इज आवर शेयर्ड एंसेस्ट्री, और उधर से वी आर स्लोली मूविंग टुवर्ड्स इट. एंड मे बी ड्यूरिंग periods of economic stress there's some resurgence towards that, but that doesn't make it right. We're all saying which is ke हम में वो टेंडेंसी है, but can we unlearn some of that, because the opposite tendency is equally also possible for us, which is that it's like, for example, हम स्कूल में 31 बच्चों की क्लास में हमें सिखाया जाता है कि खाली एक बंदा नंबर 1 पे हो सकता है, दूसरा नंबर 2 पे होगा, हर एक से लड़ रहा है वो टॉप पोजीशन के लिए. लेकिन जिस दिन आप ग्रेजुएट करते हो उस दिन आप कहते हो कि अब आपने सारों के साथ मिलकर टीम वर्क करना है. और फिर उससे जिस दिन आपको जॉब मिल गई, फिर आपकी उससे अगले दिन शादी हो जाती है और आप कहते हैं उनके साथ भी आप बना के रखो. सो पूरी जिंदगी हमें एक एज अ सोसाइटी वी आर पिचिंग more men against men, and generally people against people. We're also pitching men against women. So हमें जो एक competitive हमारी streak है, हो सकता है that is a tribal ancestry, but then फिर एक social construct भी है कि हमें यही सिखाया जाता है एक दूसरे के साथ रहना, इंक्लूडिंग फैमिलीज. हमारी फैमिलीज में नो मैटर हम अपने कल्चर में हम दूसरों को क्या दिखाते हैं,
कि हम हमारी फैमिली सारी इकट्ठी हैं और हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे का ख्याल करते हैं, पता नहीं कितना ख्याल करते हैं। मतलब हर फैमिली के पास कोई ना कोई इस तरह का, हर फैमिली के पास एक एग्जांपल होएगा कि दो लोगों की आपस में फूट है प्रॉपर्टी पे, किसी चीज पे, और 20-20 साल से 30-30 साल से एक दूसरे से बात नहीं करते। सो आई मीन दीज आर आवर सोशल प्रॉब्लम्स के मतलब हमारा ख्याल है कि दीज डोंट एग्जिस्ट एंड वी क्विकली ग्लॉस ओवर देम, के बड़ा शेम हमें होता है कि यार ये बताना नहीं है, किसी को करना नहीं है। लेकिन हमारे ये प्रॉब्लम्स हैं कि हमें एक दूसरे से शेयर करना, एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के साथ बना के रखना, इंक्लूडिंग हम जो पहले बात कर रहे थे कि दैट सेंस दैट कैन वी बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर येट मेंटेनिंग आवर रिलेशनशिप्स, के एक दूसरे से कैन वी एग्री टू डिसएग्री विदाउट स्पॉइलिंग आवर रिलेशनशिप्स, कैन वी हैव डिफरेंट ओपिनियंस येट रिस्पेक्टिंग द अदर पर्सन इनफ कि यार खैर है यार, अगर आप ऐसे सोचते हो तो ये भी ठीक है। तो वो वाली चीज आई थिंक इज समथिंग वी आर ऑल वर्किंग टुवर्ड्स, इट्स अ प्रोसेस। Yeah, agreed. No, I love the point about it. Rather than, I mean, we're taught competition rather than collaboration. I think yeah, that's a good point. Steve साहब, आप एक subtlety सी मुस्कुराहट दे रहे हैं. I think you want to share something. राणा साहब, I think आपकी तो बहुत बिल्कुल subtle नहीं है मुस्कुराहट. नहीं, nothing in particular. I think हमने काफी ज़्यादा for a first discussion amongst us four, I think हमने काफी ground cover किया अगर उसमें देखा जाए तो, और काफी सवाल हमने खोले हैं, जवाब इतना ज्यादा नहीं है, and once again वो इसलिए भी नहीं है क्योंकि it's not meant to be a simple straightforward answer. Like Steve said, it's a process of getting to a particular sort of point and not necessarily an answer right from the get go. ठीक है, तो चीजें काफी सारी हैं, and I think we've somewhat covered a lot, unless something किसी ने कुछ ऐड करना है इसके अंदर। हमारी डायरेक्शन बताएं दैट एज भाईचारा हमने जो इनिशियली ब्रेनस्टॉर्म किया था, दैट व्हाट आर सम टॉपिक्स दैट वी मे वांट टू कवर इफ समथिंग। Yeah, no, I think yeah, fantastic contributions. I think आजकल again I think like we all agreed we need to at least establish कि एक space बन जाए और उससे why that space is important. I think वो काफी clear हो गया. Some of the topics that I had in mind, actually I think we all had in mind were the first one that I wanted to talk about after this was कि because हम लोग बहुत ज़्यादा foundations की बातें कर रहे थे कि हम लोग क्यों backdrop से हम लोगों को इतना ज़्यादा बचपन में हम नहीं बोल सकते थे या इतने expressive नहीं है, अब आके हमने सीखा है. So बचपन का एक जो बहुत हमारे लिए एक major figure होता है, that's your father. Right, and I think a lot of all of us, I think we have very distinct relationships with our fathers. Everybody does, but how they define and shape us, how they influence our own decisions, that's very important. So that's, I think, a topic that I think we should definitely cover in the next time around. Some other more interesting and important topics are, I think one of my favorite ones is shame, guilt, and how they influence our decisions and behaviors. Abuse and abusiveness, how that that generally plays out, how that contributes to anger and aggression, how trauma affects our authenticity. I know ये बहुत cover मारते topic है, but from मैं थोड़ा सा पाकिस्तान perspective से भी इसे लाना चाह रहा हूँ. Another topic I think we should talk to. I think we've already covered why men don't talk to men, but I think what we haven't really explored is why men don't necessarily talk to women. I think expressing our emotional needs with women, we might do it with our mothers maybe, or our spouses, but generally wo kya dynamic hai. I think the other topics that we can cover are health, substance use and abuse, infidelity, and I think so a lot to cover over the next upcoming series. If I've missed anything, do let me know. पेरेंटिंग की में हमने मेरे ख्याल हम कवर कर लेंगे. Sorry? We'll keep on adding. We'll keep on adding. और पेरेंटिंग की बात आप भूल गए थे. ये दोनों चीजें बाकी बात हुई थी जो आपको आवाज नहीं आ रही थी ना तमीम साहब, वो मैं वहां याद कर रहा हूँ. ठीक है, parenting. Childhood and parenting. Yes. I think that's also a big one. So on that note, I think we can wrap up this fantastic decision. Taseeb bhai, Umar Lateef bhai, Rana Saab bhai, and obviously yours truly, Tameem bhai. Allah Hafiz kehte hain. Inshallah, next time we shall continue. Zindagi rahi to jald. Thank you ji. Zindagi rahi to jald. Thank you. Inshallah.